अच्छा, using a catalyst increases the rate of a या speed of a reaction. अच्छा, इससे अच्छा speed of a reaction को हम rate of a reaction भी कहते हैं. Speed of a reaction is also known as rate of a reaction. अब कैटलिस्ट डालने से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं. देखो, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर endothermic reaction. Why? Because products are at a high energy level than reactants. On x-axis, we take progress of a reaction. On y-axis, we take enthalpy change, which is kilojoule per mole. And the energy profile diagram looks like this. And what is the activation energy on this profile? Reactant till peak. This is the activation energy, the red one. So here, this is the activation energy. Right now, we are not using the catalyst. So without catalyst, activation energy is like this. So EA means activation energy. EA is activation energy. Okay, the long shot. Let's say if we use a catalyst, तो catalyst use करने से activation energy कम होती है ना, but enthalpy change of a reaction stays constant. So when we use a catalyst, तो without catalyst तो हमने वो बना दी, but with catalyst इसकी activation energy जो है ना decreases. तो वो प्रोफाइल जो है ना, चलो इसी पे बना लेते हैं ताकि ना ज्यादा अच्छा समझ आए. So the profile becomes something like this. So now activation energy is this green one जो के ब्लू में बना देते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, जो ब्लू में बनी हुई है ना, ये कम वाली है. तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट. इसको मैं अलग से भी बना देता हूँ करके. एक्टिवेशन एनर्जी विद catalyst. But using the catalyst does not affect the enthalpy change of a reaction. Enthalpy change देखो, जो reactant product के बीच में difference है, it is same with or without catalyst. Using a catalyst only decreases activation energy, but the enthalpy change stays same.
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. The आगे कर दो catalyst स्क्रीन। activation energy decreases, right? जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। Okay. Sir, the black one takes more time. The black line. The black line is the enthalpy change of a reaction. It stays same with or without catalyst. The red one is the activation energy without catalyst, and that will take. अच्छा, वो that black one, ऊपर वाला प्रोफाइल वाला black कह रहे हो? जी जी जी, yes, that will take more time. मतलब, or you can say it's Okay, a sir. slower reaction. Yeah, okay. चलें आगे। अली, हाँ, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना? बस खत्म हो रहा है टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन तो नहीं है किसी का कोई? No questions, sir. चलो, अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा एक्सोथर्मिक की अगर हम प्रोफाइल देखें? An exothermic reaction, reactants are at a higher energy level than products. Reactants and products so this is the activation energy. An exothermic reaction, ये वाली reactant से peak तक जो activation energy है, that is activation energy without catalyst. But if we use a catalyst, so its activation energy would decrease. Let's say it's something like this. So this red one is the activation energy with catalyst. Okay. Yes, sir. चलो, अच्छा, चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट पास्ट पेपर्स। क्वेश्चंस करते हैं अभी। Sir, so I'm still copying. ओके।
अच्छा, टेस्ट पेपर्स आपके मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, इस वीकेंड पे चेक हो गए तो मार्क्स भी आपको अभी बता देंगे सर हमको। चलें आगे। Yes, sir. Question 1 says the diagram shows an energy profile diagram for a chemical reaction both with and without catalyst. Sir, Which B. which energy chain is the Sir, B. activation energy of the catalyzed reaction? So B, catalyzed sir. reaction are those reaction with catalyst. B. So B is the B, activation वो energy with activation energy catalyst. lower. Yes, this is with catalyst. And A is the activation energy without catalyst. Clear है सबको? जी सर. Sir, Okay, question 2 is which statement is not correct? Energy is released when a liquid changes into a solid. So when we have to change any liquid into solid, तो उसको हम हीट करते हैं या ठंडा करते हैं? Sir, sorry, ठंडा. Please. लिक्विड टू सॉलिड करने के लिए वी हैव टू कूल इट डाउन ना, फ्रीज कर रहे हैं उसको, कूलिंग कर रहे हैं उसकी, फ्रीजिंग कर रहे Requires हैं. So please gain. this cooling is means you are removing the energy. So energy is released when any liquid changes into a solid. ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड हीटिंग करते हैं तो एब्जॉर्ब कराते हैं एनर्जी, और जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो एनर्जी रिलीज करता है. कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी, राइट? Yes. So this statement is correct. So this is not our answer. उसने बोला है you have to pick the not statement which is not correct. तो ये तो Sir, correct है, मतलब हमारा आंसर नहीं है. B is particles move faster in gaseous state than in the liquid state. yes, So sir, this true. is true. So particles move faster Sir, when they are C. in gaseous state, faster in gaseous state, मतलब they move randomly in all directions. In gas और liquids में particles they just can move about each other. तो स्पीड ज्यादा किसकी होती है? पार्टिकल्स की गैसियस स्टेट में होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है. C is saying the carbon atoms in gaseous methane are further apart than those in solid diamond. ओके, Yes, sir. मीथेन का फॉर्मूला हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था which is CH4, and if this is in gaseous state it means the molecules are far apart from each other, and diamond is a solid में particles are closer to each other, right? So this statement is also correct. गैस में पार्टिकल्स कार्बन के दूर 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 होंगे और सॉलिड में करीब करीब होंगे. Sir, is there ये any भी equation आंसर. wrong? sir, D होगा क्योंकि volume always remains same. Yes, there is a large decrease in the volume of solid metal when the pressure is applied to it, because in solid particles are already closer to each other. So do you remember states of matter? If you apply this question, actually the statement 1 is only related to this chapter, but other statements are from other chapters. So in Sir, solid, yes, but when you increase the pressure, isn't there more or less space? So there's another large decrease in the volume. but that happens only in gases. In solids, particles are already touching each other. There are no gaps in between the particles. So if you apply the pressure, this won't make any difference because particles are already touching each other. They cannot move further closer to each other. Okay, sir. So there is no decrease in volume of a solid metal when pressure is applied. In gases, only the volume changes when you apply the pressure. Remember, we studied Boyle's law, which says pressure is inversely proportional to volume.
प्रेशर Yes. बढ़ाते हो तो गैस का वॉल्यूम Yes, sir. डिक्रीज होता है, बट दैट इज ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दिस इज आवर आंसर. बिलाल, समझ आई बात? जी, I got it. बड़ा बड़ा ठीक है नाफे, सर. दानियाल, फातिमा, हिबा, Yes, sir. मिशाल, Yes, sir. सहर, समरा, उजैर. बेटा समझ आ गई? आगे बढ़े. Yes, sir. क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना है. Which change is endothermic? Endothermic changes are those in which heat energy is absorbed. In endothermic reaction, thermal or heat energy is absorbed. अच्छा, जो रिएक्शन 1 है ना ए में, वेल दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अभी मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड व्हिच रिएक्शंस आर Sir, एक्सोथर्मिक. is B ये जो endothermic? मैं बताता हूँ, एक मिनट समझना पड़ेगा. देखो Sir, A is exothermic because it's been broken down. देखो मैं ना अभी इसको ना थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. असल में कुछ क्वेश्चन जो है ना वो अभी आगे भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन, तो हमें पता होगा कि वो एक्सोथर्मिक है. बट स्टिल अभी मैं कुछ एक चीज समझाता हूँ आपको इसमें. देखो, whenever any chemical reaction takes place, we studied that, and on the reactant hand side, bonds are broken. So heat energy is absorbed to break the bonds. अब जैसे ये रिएक्शन ए है ना, जिसमें we have methane which is CH4 and oxygen producing carbon dioxide and water. तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे भी बॉन्ड्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी बॉन्ड्स हैं. रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं बॉन्डिंग देखूं तो रिकॉल द बॉन्डिंग फॉर मीथेन, इट इज समथिंग लाइक दिस. और ऑक्सीजन की जो होती है वो इस तरह से होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं. अब देखो, एट द रिएक्टेंट हैंड साइड हीट एनर्जी शुड बी एब्सॉर्ब्ड, and On at the the product left or side right? bonds are formed. Left hand side heat energy is absorbed, on the product side heat is released. Right? तो देखो अब होता क्या है कि अब just by looking at the chemical reaction we cannot decide कि heat energy absorb ज्यादा हुई है या रिलीज ज्यादा हुई है. ठीक है, तो उसके लिए तो वैल्यूज गिवन होंगी, तो मैं डिसाइड कर सकूंगा ना कि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. तो इस तरह के रिएक्शन में तो वी कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बट जब हम आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें हमें ये पता चलेगा कि whenever anything is burned into oxygen, whenever anything, when any substance reacts with oxygen, so that reaction is always exothermic. लेकिन फिर भी अगर अभी आपको तो नहीं समझ आ रहा अगर ये एंडो है या एक्सो है, तो हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. अब ऑप्शन बी में we have hydrogen atom and chlorine atom. So is there any bond breaking on the reactant hand side in option B? No, sir. Option B में we just have atoms. There are no bonds in between hydrogen and chlorine. देखो रिएक्टेंट साइड पे तो कोई बॉन्ड्स है ही नहीं ना, एटम अलग अलग है. तो जब कोई बॉन्ड्स ही नहीं है तो बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हुआ होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हुआ तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी. तो रिएक्टेंट साइड पे नो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब. So heat energy absorbed at the reactant hand side is 0 joules. But at the product side, there are bonds formed between HCl. इधर bond formation हुई है ना? It means कि heat energy must have released.
हीट रिलीज हुई है। अब क्या वैल्यू रिलीज हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि 0 जूल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब भी हीट एनर्जी रिलीज होती है डेट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब -2 है, -10 है, -100 है, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो नेगेटिव ना। तो इसका एलपी चेंज आएगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो जब सिर्फ हीट एनर्जी रिलीज होगी तो इट मींस के वो नेगेटिव होगा ना, सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ रिलीज हुई है, तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज शुड आल्सो बी नेगेटिव। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जी सर। अभी मुझे सब बताओ कि ये क्लियर हुआ जो ऑप्शन बी हम बात कर रहे हैं। क्लियर जी हो गया सर। आर यू श्योर? जी सर। अच्छा, ऑप्शन, अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन सी को कंसिडर करें तो ऑप्शन सी में हमारे पास ऑप्शन सी इज वाटर है एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। तो रिएक्टेंट साइड पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स थे जो कि ब्रेक हुए हैं, और प्रोडक्ट साइड पे देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स दे आर आइसोलेटेड, अलग अलग हैं अभी भी। तो हीट एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी इसमें रिएक्टेंट साइड पे, बट क्या हीट रिलीज हुई है? बॉन्ड बने ही नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट साइड, नो हीट रिलीज। So only heat energy is absorbed in this reaction. so No sir heat energy is released. So सिर्फ और सिर्फ absorb हुई है ओवरऑल रिएक्शन में हीट एनर्जी, तो दिस मस्ट बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट अबाउट डी? डी में वाटर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में गया है, तो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग इज डन बाय कूलिंग, एंड कूलिंग मींस रिलीज ऑफ हीट। ठंडा करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, जब गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो in order to convert liquid water into solid water, मतलब from water to ice, you have to cool down the water, means you have to release the energy. So when heat energy is released, so that reaction is exothermic. सिर्फ एक ही एंडोथर्मिक आ रहा है, that is C। समझ आई सबको बात? जी सर। जी सर। आगे बढ़े, कोई क्वेरी तो नहीं है किसी को? जी सर। ठीक है। जी सर। चलो। क्वेश्चन 4, the energy profile diagram for a reaction is shown, which statement is correct? He's saying the activation energy of the reaction is H3 minus H1. अब this is an endothermic reaction. अब क्यों, कैसे endothermic reaction है? Because products are at a high energy level than reactants, and the activation energy is always from the reactants to the peak. So this is the activation energy. और activation energy देखो H1 से लेके H3 तक है. So activation energy is basically H3 minus H1, right? तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3, H3 का जो भी लेवल है माइनस H1 का जो भी लेवल है, तो ओके यहाँ सर। से रिएक्टेंट से पीक तक H3 माइनस H1 आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, Sir, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। if it's at catalyst, we would do B.
नो, कैटलिस्ट के लिए तो फिर प्रोफाइल बना के देगा ना। कैटलिस्ट की प्रोफाइल जब कैटलिस्ट यूज किया तो उसके लिए फिर उसको नई प्रोफाइल बना के देनी पड़ेगी, अभी तो बनाई भी नहीं है। तो वी कैन नॉट डिसाइड कि कैटलिस्ट के वक्त एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। ओके सर। अच्छा, ऑप्शन बी में कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 - H2। अब दिस इज नॉट H3 - H2, एक्टिवेशन एनर्जी H3 - H2 तो ये होगी ना, प्रोडक्ट से पीक तक थोड़ी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द पीक ऑफ द प्रोफाइल। तो ये भी याद रखना, activation energy is from reactants to peak। तो H3 - H2 cannot be the activation energy। इसी तरह del H is the enthalpy change of a reaction। del H जो होता है ना, this is enthalpy change। और enthalpy change अभी हमने देखा है, it is the difference between the enthalpy of product minus enthalpy of reactant। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो है देखो H2 से शो की हुई है, दिस इज द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जगह हम H2 रखेंगे, माइनस रिएक्टेंट की जगह इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज डिनोटेड बाय H1। तो उस हिसाब से ये H2 - H1 बनना चाहिए, नॉट H1 - H2, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। सही है, इस वजह से सी भी गलत हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने उल्टा लिखा हुआ H1 - H2, और उल्टा लिखने से साइन चेंज हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। तो रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट इज H2 and reactant is H1, so this should be enthalpy change should be H2 - H1, product minus reactant। समझ आई ये बात? और डी क्यों गलत है? del H is H1 - H3। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, H3 तो जो है पीक तक इंथैल्पी है, हमें तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो कि H2 है माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी जो कि H1 है वो करना है, तो डी भी गलत हो जाएगा। सही है बिलाल, बी नहीं आंसर ए है। जी सर। क्लियर है सबको? जी सर। दानियाल, नाफे, यस सर। Yes, sir. मूसा, साकिब, समरा, जी उजैर, जी जी। आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 5 इज which physical changes are both exothermic। डी। तो कूलिंग process are always exothermic and heating processes are always endothermic। Sir B. Yes, it's B। No, they are asking for exothermic। तो देखो, condensation is cooling from gas to liquid, so this is exo, and evaporation is liquid to gas, which is heating, so evaporation is endothermic। So these both not are exothermic ना, एक endo है exo है, तो A नहीं होगा आंसर। C. Evaporation is endothermic and melting is endothermic। Yes, it's B, sorry। Yeah. Evaporation endothermic Wait, है sir. क्योंकि आप liquid to gas कर रहे हो, heating कर रहे हो। Melting solid to liquid heat करके करते हैं, तो that is also endothermic। Sir, it asked for exothermic. Which one? It asked for exothermic. Melting is endo No, and no, freezing is exo। the question is asking for exothermic. Oh, sorry, it is asking for Yeah, exothermic, so sorry, C. sorry। Okay, so this should be C। Freezing is ठंडा करना ना, exothermic। Condensation, gas to liquid, again done by cooling, this is also exothermic। they are asking for exothermic, not endothermic। endothermic होता तो B होता, so the answer is C है। Yes. सही है अली, बिलाल, Yes. जी सर सही है। अली समझ आ गया आंसर, चले आगे।
जी। ओके, वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन 6 राइट नाउ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है नॉलेज इसकी, तो उसको अभी हम स्किप करेंगे, बट हाँ इसको रहने दें। तो क्वेश्चन इज पेंडिंग, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ करेंगे क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता। So is organic chemistry difficult? नो, Okay. inorganic is difficult. Okay, question 7, which change in conditions increases the energy of particles in a reaction? B. एनर्जी इंक्रीज करनी है तो Oh, D. टेम्परेचर इंक्रीजेस द एनर्जी। ठीक है, catalyst decreases the activation energy, but energy of particles can only be increased by one method, which is increase in temperature. ठीक है, and this question you study in rate of a reaction in detail, मतलब rate of a reaction में भी डिस्कस करेंगे इन फैक्टर्स को, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े से सिमिलर हैं तो इनके क्वेश्चंस मिलते जुलते आते हैं। तो अभी 7 भी हम सॉर्ट ऑफ स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर आप लोग बताओ। Okay, so What is the enthalpy change for the catalyzed reaction? सर बी। So catalyzed reaction का जो enthalpy change आएगा, it is from the reactant level नहीं, to the peak, this one. तो ये 100 से लेके कहाँ तक जा रही है? B. 100 से लेके it is going till, it is in between 150 and 200, तो 175 हो जाएगा ना? Okay, so तो C. डिफरेंस कितना आ रहा है? 175 minus 100. And it's what do you say? This is plus 75, and activation energies are always positive. It's exothermic, Supply right? करते हो ना, ठीक है, you can also write activation energies are always positive. They can never be negative. They are always positive for both endothermic and exothermic reaction. So this is originally exothermic reaction, right? This is an exothermic reaction, yes. Activation energy always positive for both. So enthalpy can be negative, right? Yes, enthalpy for exothermic reaction is negative, for endothermic reaction is positive, but activation energy is always positive for both endothermic and exothermic reaction. It asks for enthalpy. Oh, what I'm So doing today. the They are answer is asking C. for, they are asking for enthalpy. They're not asking for activation energy. They're asking for enthalpy. Enthalpy is the difference between product minus Yes, sir. reactant. Yes, Oh, D, right? my bad. Sorry, say what's it? 50. This is 50. B. हाँ Yes, this is 50. And the reactant enthalpy is at 100. 100 minus 50. So this is enthalpy change. क्या होता है? Enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Product enthalpy is 50 and reactant enthalpy is 100. Minus 50. So this will give minus 50 kilojoule per mole. This is B. I'm so sorry. मैंने activation energy बता दिया था. No problem, sir. यार वही बात सबको, नाफे, बिलाल, दानियाल, मूसा, मिशल, जी सर, मेरे ख्याल में शुरू में Yes, बी sir. कहा था। So I told you it's enthalpy. Okay, I'm so sorry. आगे बढ़े. जी sir. जी सर।
Okay, question 9 is saying bond breaking is endothermic process and bond making is exothermic process. We already know that. For which change is not possible from the equation to deduce whether the reaction is endothermic or exothermic. The कौन सी equation में we cannot say for sure कि whether it is an endothermic or exothermic reaction. If we see equation A, तो at reactant hand side there is bond breaking because chlorine Cl2 है ना. No, he's asking in which reaction we cannot say for sure because जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों हो रहा होगा उसका हम नहीं बता सकते, लेकिन ए में तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन क्लोरीन Cl2 मतलब देयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग बट देयर इज नो बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो ए इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हम बता सकते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मिंग नहीं है क्योंकि क्लोरीन गैसियस एटम अलग है. लेफ्ट हैंड साइड पे Cl2 मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो वी कैन से ए इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. बट फॉर बी at left hand side hydrogen H2 means hydrogen hydrogen bond and Cl2 means chlorine chlorine bond, and right hand side pe HCl means hydrogen chlorine bond. So there is bond breaking as well as bond formation. So we cannot say ke whether it is an endothermic or exothermic because we do not know how much energy is absorbed during bond breaking or released during bond formation unless he gives us the values. तो हम अभी तो नहीं बता सकते देख के, तो we are not sure whether it can be an endothermic or exothermic. Whereas in option C, we can see left hand side पे water. Water of course have hydrogen oxygen bonds, but on the right hand side hydrogen is alone and oxygen is alone. So it means there is no bond formation on the product side, and there is only bond breaking between hydrogen and oxygen bonds on the left hand side. तो ये भी endo होगा. And D में लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एटम अलग है क्लोरीन एटम अलग है, मतलब देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड्स है ही नहीं तो ब्रेक कहां से करोगे. बट ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव HCl मींस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो बी के बारे में हम नहीं बता सकते वेदर इट इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. तो वो ये कह रहा था कि विच चेंज इज नॉट पॉसिबल फॉर द इक्वेशन टू डिड्यूस. सही है अली, समझ आई बात? समझ आया सबको वाला क्वेश्चन या नहीं? अली सर सिंह वो चैट में मैसेजेस लिख रहा है. ओके is saying he didn't understand. अच्छा ठीक है. अच्छा बाकी क्वेश्चंस फिर आप होमवर्क में ट्राई करना. ये फाइल भेजी थी मैंने, ये क्लासरूम से डाउनलोड करोगे? सर डाउनलोड कर लोगे गूगल क्लासरूम से या मैं सेंड करूं फाइल? सर साथ सेंड भी कर दें. सेंड कर दो, चलो आई सेंड इट. कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. बट इट वुड बी बेटर इफ यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आया सिर्फ वो पूछ लेना तो जल्दी हो जाएगा. आसान वैसे इसी तरह के क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं. पेपर 2 मैं खुद करवा दूंगा इसका थ्योरी वाला. ओके चलो जा सकते हो अभी. अल्लाह हाफिज.